हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं मैट्राइसेस के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो है टाइप 8 और उसका नेम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय द डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्राइसेस? Let us consider a square matrix is said to be a diagonalizable if it is similar to a diagonal matrix. So diagonal matrix means what? जिसमें only diagonal elements are present, all other elements are zero. So in other words, if there exists a invertible matrix और इसे transforming matrix भी बोला जाता है P and a diagonal matrix D such that A is equal to P इंटू डी इंटू पी इनवर्स और इसको इनवर्स किया D इज इक्वल टू P इनवर्स A इंटू पी मीन्स A को D में ट्रांसफॉर्म करता है और D को A में ट्रांसफॉर्म करता है। इफ सच अ P मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कंप्यूट any power of A, because as we get the transforming matrix we can calculate any power of A from power of D. Okay, then यहाँ पे दो important terminologies है. First one is algebraic multiplicity and second one is a geometric multiplicity. तो पहले देखते हैं what is mean by algebraic multiplicity. Algebraic multiplicity is the repeatability of the eigenvalue. Means if any equation is having three different eigenvalues, then algebraic multiplicity of that each eigenvalue is 1, or any of the eigenvalue is repeated twice, then algebraic multiplicity is 2. If any of the eigenvalue repeated thrice, then its algebraic multiplicity is 3. Okay, then next, geometric multiplicity. So in this, number of eigenvectors corresponding to that particular eigenvalue. If any single eigenvalue is giving only one eigenvector, then its geometric multiplicity is 1. In case of a repeated eigenvalue, one eigenvalue will give two different vectors. In that case, its geometric multiplicity is 2. If any repeated eigenvalue gives three different vectors, then geometric multiplicity of that particular eigenvalue is 3. Okay, so for a matrix is to be diagonalizable, algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity. अभी हम देखते हैं what is the procedure to show matrix is diagonalizable and then finding the transforming matrix, और उसी को modal matrix बोला जाता है M and diagonal matrix D. Okay, तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोग को एग्जाम में, उसमें हम लोग को ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स और मॉडल मैट्रिक्स जो M से डिनोट करते हैं एंड सेकंड डायगोनल मैट्रिक्स जो D से डिनोट करते हैं, ये फाइंड आउट करना रहता है. तो मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसीजर, स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A. तो जो कोई भी मैट्रिक्स A दिया गया है उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का रहता है. सेकेंड, फाइंड इट्स रूट, or that is also known as a eigenvalues. Means step 1 find out characteristic equation of matrix A, step 2 find out its eigenvalues. After getting the eigenvalues lambda 1 and lambda 2 and lambda 3, step 3 is to check. Okay, this is important check. If eigenvalues are distinct, means if eigenvalues are different, then that matrix is diagonalizable, and then we have to move towards the step number 4. Secondly, if roots or eigenvalues are repeated, if any of the root is repeated or single root is repeated, in that case we have to calculate the algebraic and geometric multiplicity of the repeated root. Okay, already in previous slide we have studied what is geometric and algebraic multiplicity. So whenever repeated root comes, we have to check algebraic and geometric multiplicity of that repeated root. If algebraic and geometric multiplicities are equal, then matrix is diagonalizable, then we have to go to step number 4. And if algebraic multiplicity is not equal to geometric multiplicity, then that given matrix is non-diagonalizable. In such a cases,
वी हैव टू स्टॉप द प्रॉब्लम. इसके आगे प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं. तो दो ही चीजें याद रखनी है. फर्स्ट, इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट then matrix is diagonalizable. If eigenvalues are repeated, then check algebraic and geometric multiplicity. If algebraic and geometric multiplicity is equal, then matrix are diagonalizable. If not, then matrix is non-diagonalizable. Then step number 4, then find eigenvectors corresponding to eigenvalues, that is x1, x2 and x3. Now after getting the different eigenvectors corresponding to each eigenvalue, we have to move towards the step number 5. तो step number 5 क्या है? Then matrix A is diagonalizable. Therefore, we can write M inverse A into M is equal to D, where A is given matrix or which is called as a diagonalized matrix. Okay. Secondly, D is diagonal matrix which is equal to lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 and 0 0 lambda 3. This lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are the eigenvalues of that matrix. So this matrix is composed of eigenvalues of that given matrix as diagonal elements and other elements are 0. Then last, M is equal to transforming matrix और विच इज ऑल्सो नोन एज अ मॉडल मैट्रिक्स, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल में मॉडल मैट्रिक्स पूछा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. एंड दिस ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स और मॉडल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट corresponding to each eigenvalue just written in the column format. So x1, this is x2 and this one is x3. Everyone clear about this? So diagonalization is nothing but finding the eigenvalues and eigenvectors of the given matrix, okay, and after that writing diagonal matrix and transforming matrix. Okay, now moving towards the numerical. So what is given in the numerical? Question 1, show that 2 2 1 1 3 1 1 2 2 is the given matrix, is diagonalizable. Then determine transforming and diagonal matrix. Means we have to check first for the diagonalization and after that we have to determine transforming matrix M and diagonal matrix D. This sum is asked in University of Mumbai during May 22, May 25, December 22 and December 24 exam. So most important numerical from exam point of view. तो अभी देखते हैं solution क्या है. Once again starting here, A is equal to, हम लोग लेते हैं given matrix, that is 2 2 1 1 3 1 1 2 2. Okay, after writing this, the characteristic equation is given by A minus lambda I in the mod is equal to 0. Okay, therefore we are writing it in the matrix form, that is 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 and 2 minus lambda, okay, which is equal to 0. Then writing it in the short form, that is lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus mod of A is equal to 0. Okay, where s1 is equal to sum of main diagonal elements of A. Okay, sum of main diagonal elements of A, which is equal to 2 plus 3 plus 2. So 5 plus 2 is equal to 7. Therefore s1 is equal to 7. Then s2 is equal to sum of minors of main diagonal elements of A. Okay, is equal to, I am writing minors directly, that is 3 1 2 2 plus 2 1 1 2 plus 2 2 1 3. Okay, that is equal to
3 2 जा 6 -2 plus 2 2 जा 4 -1 plus 2 3 जा 6 -2 is equal to, therefore S2 is equal to 11, and mod of A, that is determinant of A, is equal to 5. Okay, therefore our characteristic equation becomes lambda cube minus 7 lambda square, okay, plus 11 lambda minus 5 is equal to 0. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर हम लोग ये इक्वेशन कैलकुलेटर को फीड करते हैं तो हम लोग को लैम्बडा के वैल्यूज मिलेंगे 5 एंड 1. तो अगेन यहाँ पे अपना आइडिया यूज करने का, मॉड ऑफ ए का वैल्यू है 5, ओके, एंड वी हैव गॉट आइगन वैल्यूज है 5, 1. ये भी दो प्राइम फैक्टर्स है तो वैल्यू 5 ही रहना चाहिए, तो थर्ड आइगन वैल्यू इज 1. ओके, सो आइगन वैल्यूज आर 5, 1, 1. तो ये चीज़ दोस्तों याद रखना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सो हियर आई एम राइटिंग आइगन वैल्यूज. ओके, अभी देखो, देयरफॉर एज आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, कैलकुलेटिंग algebraic and geometric multiplicity of repeated root. ओके, तो यहाँ पे एक आइडिया है, वेन एवर वी आर सॉल्विंग डायगोनलाइजेशन सम, वेन एवर यू गॉट रिपीटेड रूट, फर्स्ट चेक अल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिपीटेड रूट, बिकॉज अगर दोनों इक्वल आए तो सम आगे जाएगा, नहीं आए तो सम स्टॉप होता है. सो विच विल सेव योर टाइम. ओके, तो अभी कैसे लिखेंगे देखो. फर्स्ट, फॉर रिपीटेड रूट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 3 is equal to 1, what we can write, a minus lambda 2i bracket complete into x is equal to 0. अभी मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स A को लाके रखा है, तो मैट्रिक्स का ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 माइनस लैम्बडा 2, 2 1 1, 3 माइनस लैम्बडा 2, 1 1 2 2 minus lambda 2, okay, in bracket x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. ओके, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 2 minus 1 is 1, 2 1, then 1, 3 minus 1 is 2, 1, then 1 2, and 2 minus 1 is 1. Okay, x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिपीटेड रूट है तो वी हैव टू यूज रैंक मेथड. सो व्हाट आई एम डूइंग, ये पहला एलिमेंट मुझे 1 करना रहता है विच इज ऑलरेडी 1, एंड द सेकेंड एंड थर्ड वन वी हैव टू डू 0. तो देखो अभी कैसे करते हैं, देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी 1, तो सेकेंड को 1 करने के लिए मैं क्या करूँगा, R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 माइनस R1. ओके, क्योंकि दोनों 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और मैं मैट्रिक्स लिखूँगा तो आएगा 1 2 1, देन 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, फॉर बॉटम लाइन ऑल्सो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0. ओके, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. ओके, देन आई विल राइट इक्वेशन. इक्वेशन क्या आएगा, 1x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3 इज इक्वल टू 0. ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हियर रैंक चेक करते हैं, रैंक is equal to R is equal to 1, because number of non-zero rows is 1. After that, number of unknowns is equal to n is equal to 3, क्योंकि x1 x2 x3 are the 3 unknown. Therefore R is less than n. If R is less than n, in that case therefore
number of unknowns minus rank, or we have to write n minus r, which is equal to 3 minus 1 is equal to 2. Therefore, we have to assume two values. Okay, तो मैं क्या करूँगा देखो, take x1 is equal to t and x3 is equal to s. ओके, मैं जानबूझ के यहाँ पे x1 और x3 को लिए, यू कैन टेक फॉर x1 एंड x2, देयर इज अ नो इशू. तो क्या होता है देखो, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स t प्लस 2x2 प्लस s. मैं इसको नंबर क्या देता हूँ, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1. तो अभी क्या करूँगा देखो, देयरफॉर 2x2 इज इक्वल टू माइनस s माइनस t. देयरफॉर x2 इज इक्वल टू माइनस s बाई 2 माइनस t बाई 2. ओके, so what different values I have got, x1 is equal to t, x3 is equal to s, and x2 is equal to minus s by 2 minus t by 2. ओके, therefore हमारा वेक्टर x क्या मिलेगा, x is equal to x1 x2 x3 is equal to, what is the value of x1, x1 का वैल्यू है t, x2 का वैल्यू है माइनस s बाई 2 माइनस t बाई 2 एंड x3 का वैल्यू है s. ओके, आई एम राइटिंग दिस एज इट इज. इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, s वाले टर्म को सेपरेट करने का है. सो हियर 0s प्लस t. ओके, ये क्या हो गया, माइनस s बाई 2 माइनस t बाई 2 एंड दिस इज s प्लस 0t. आफ्टर दिस मैं क्या करूँगा, इसमें से s के टर्म को सेपरेट करूँगा. ओके, सो व्हाट आई विल राइट, 0s माइनस s बाई 2 अपॉन s प्लस इन ब्रैकेट t माइनस t बाई 2 एंड 0t, ये भी ब्रैकेट क्लोज. तो ये आगे जाके क्या होगा देखो, दैट इज इक्वल टू, इसमें से s को बाहर निकालूंगा. सो दिस ब्रैकेट रिमेन्स 0 माइनस 1 बाई 2 1. ओके, प्लस t इंटू, ये क्या हुआ 1 माइनस 1 बाई 2 0. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, दोनों ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से. तो ये क्या बनेगा देखो, s इंटू 0 माइनस 1 2, ओके, प्लस t इंटू 2 माइनस 1 एंड 0. अभी देखो यहाँ पे आप लोग को ये होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर नंबर. ओके, या वैसे ही रखा तो भी चलता है, मैंने ये सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे कन्वर्ट किया है. देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्या है हम लोग को दो वेक्टर, 0 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 1 0. ओके, सो व्हाट आई विल राइट, देयरफॉर वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू repeated roots lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 1 are x2 is equal to 0 minus 1 2 and x3 equal to 2 minus 1 0. okay, therefore algebraic multiplicity क्या हो गई देखो, 2, because this eigen value repeated twice, and geometric multiplicity ये भी हो गई 2, because that repeated eigen value is having two vectors. Therefore I will give decision matrix A is diagonalizable. okay, अभी जब पता चला कि मैट्रिक्स A is diagonalizable, then we can calculate the vector for the distinct eigenvalue. okay, therefore second, for
lambda 1 is equal to 5, a minus lambda 1I into x is equal to 0. अगेन आई हैव टेकन मैट्रिक्स ए फॉर रेफरेंस, तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 2 माइनस लैम्बडा 1, 2 1 1 3 माइनस लैम्बडा 1 1 एंड 1 2 2 माइनस लैम्बडा 1 ब्रैकेट क्लोज, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0. ओके, देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो 2 माइनस 5 इज माइनस 3, 2 1 देन 1, 3 माइनस 5 इज माइनस 2, 1 देन 1 2 एंड 2 माइनस 5 इज अगेन माइनस 3, x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. So as eigenvalues are distinct, we can use Cramer's rule directly. Therefore I am writing equation minus 3x1 plus 2x2 plus 1x3 is equal to 0. Equation number 2, क्योंकि 1 already we have taken. And second 1x1 minus 2x2 प्लस 1x3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पे मैं दो ही इक्वेशन कंसिडर करूँगा. देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल फॉर इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिखेंगे हम लोग? x1 अपॉन x1 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो रिमेनिंग कोएफिशिएंट 2 माइनस 2 1 1 इज इक्वल टू x2 इज ऑलवेज नेगेटिव, x2 अपॉन x2 के कॉलम को छोड़ देंगे, सो माइनस 3 1 1 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन x3 के कॉलम को छोड़ देंगे, सो माइनस 3 1 2 माइनस 2. अभी देखो सॉल्व करने के बाद क्या आता है? x1 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस x2 minus 3 minus 1 is equal to x3, 3 2s are 6 minus 2. Therefore we will get x1 by 4 is equal to minus x2 upon minus 4, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, which is equal to x3 upon 4. Therefore हम लोग क्या लिखेंगे? x1 by 4 is equal to x2 by 4 is equal to x3 by 4. अभी ये जो दिखेंगे इसमें 4 सबके डिनोमिनेटर में है, तो 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्ट टू 1. सो x1 बाय 1 इज इक्वल टू x2 बाय 1 इज इक्वल टू x3 बाय 1, और कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 4. ओके, देयरफॉर x1 बाय 1 इज इक्वल टू x2 बाय 1 इज इक्वल टू x3 बाय 1 इज इक्वल टू 1. टेक, तो अपना वेक्टर क्या आ गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू 1 1 1. ओके, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 5, रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर x1 is equal to 1 1 1. Okay, now as matrix A is diagonalizable where A is equal to given matrix which is equal to 2 2 1 1 3 1 1 2 2. Okay, D is equal to diagonal matrix विच इज इक्वल टू जो भी अपने आइगन वैल्यूज है उसको लैम्बडा 1 0 0 0 लैम्बडा 2 0 एंड 0 0 लैम्बडा 3. ओके, सो आइगन वैल्यूज को लिखना है विच इज इक्वल टू 5 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, एंड M इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स और मोडल मैट्रिक्स which is equal to first vector is 1 1 1 x1, second vector is 0 minus 1 2
and third vector is 2 minus 1 0. Okay.